So they're learning all the skills here and all the actual equipment. Then we pull out the push back. All of them are reusable or whatever space. So this was the unutilized welfare building. So that is how we kind of Unutilized welfare area. In fact, the entire real estate we get to the welfare department. Because these, I number of these buildings. Akhilesh, photo ले लो कहाँ? Yeah. Just take it to this. इधर से ले. क्या है ना? These are workstations which we have actually bluntly imitated from the Japanese model of things. We have done some commercial training here. He has to replicate the workplace so that it's very fit for purpose. No, I've seen other such standards. Other such Centers. centers where they have It is by pocket time. We've got So and here we have virtual reality. Basically, the Toyota the 360 degree. No, this final check. So 360 degree. So you can turn around, you can see down, you can see up. up and down. Yeah, you can see up and down. Actually, see how forklift is getting assembled. This is how actually we augment it. This is how you remember the engine, combustion engine, how do you kind of it takes a 3D projection of it and projects the engine. You can identify what are different parts. Yeah. This is biometric, Aadhaar based biometric attendance. So you know every day you need to leave the school and stuff. Obviously yours is the protection, sir. So it's really the same. That is what while we have authenticity of attendance, geostab. This what is the number of people trained in and it's all of these electrical, plumbing, technical, right?
they've been pampered here. So we do a bunk bed and stuff. Then the work site, Dubai may be still okay, but domestic. So where do you get your students from? From the district. So actually you go to the district administration. Only here. Rest of the and we create that birth certificate passport, all births and things. So all लेकिन इस शताब्दी में हमारी आवश्यकता है आईटी। कल्याण विभाग अभी IIT फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास की सराहना करता हूँ, जो हर जिले में गुरुकुल स्कूल खोल रहे हैं, जिसमें आदिवासी और गरीब अल्पसंख्यक यहाँ पर शिक्षा ले सके, ताकि अपनी हुनर के माध्यम से भारत देश ही नहीं पूरी दुनिया में झारखंड का नाम रोशन करें। Pragya Foundation is a non-profit joint enterprise between PAN and Jharkhand to implement and scale sustainable welfare initiatives. I'm happy to work with the China IIT Foundation, the state government of Jharkhand has initiated a move to establish skill development centers all over the state of Jharkhand with a focus on affirmative action and with the support of organizations like CII, NABARD and industries. Even before a Gurukul is set up, PAN IIT contracts with employers, typically CII members, for technically skilled jobs to assure placements in India and abroad. Hence, jobs are waiting for students even before they enroll in this demand-led training model. हम कहीं भी जाएंगे तो नौकरी तो हमें 10,000 से नीचे की नहीं मिलेगी, और अभी के समय में अगर मैं 10,000 कमाता हूँ तो कल के समय में 15,000 कमाना तो भी कर रहे हैं, और गुरुकुल के एस्पिरेंट्स बहुत बाहर भी गए हैं, विदेश तक गए हैं। To ensure that no needy person is denied an opportunity to upskill, 100% financing is made available through NABARD, thus fulfilling the vision that if an IITian can get a loan for his education, then why not the poorest of the poor? जिस तरह हम लोग नाबार्ड बैंक से लोन आए हैं, लोन के लिए हम लोग ये किए थे, तो नाबार्ड वाले लोन ये प्रोवाइड किए हुए, तो उसी चीज़ से हम लोग वहाँ जाएंगे और इंस्टॉलमेंट के जरिए पैसा नाबार्ड वाले को पेमेंट करेंगे। Gurukul provides residential fit-for-purpose training in technical skills in sectors like construction, manufacturing, medical services and logistics. The emphasis is on practical experience for enhancing productivity, imparting quality and ensuring safety. Training is imparted using latest technologies, including simulators to create work-site-like infrastructure. सिलाई का ही काम करेंगे, क्योंकि हम सिलाई सीखे हैं और अच्छा इलेक्ट्रिक का मशीन है, तो अच्छा से हम सिलाई करेंगे और वही कमाएंगे। जैसे लिखित सभी किया उसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल करते हैं, कैसे मशीन हैंडल करना है, कैसे पाइप कटिंग करना है, कैसे फिटिंग करना है, कैसे लगाना है, कैसे मेजरमेंट करना है।
values and life in Urdu, including discipline, financial and credit literacy, in addition to technical training. खाना पीना भी बहुत अच्छा मिलता है, साफ सुथरा जगह है, सोने वोने के लिए हर चीज़ यहीं पर मिलता है। हम लोग को सिर्फ घर पहनने के लिए कपड़ा लाना पड़ता है। इसलिए गुरुसर सर कि हमको यहाँ से बहुत तरह की जानकारियाँ मिलती है, अपने सेफ्टी के बारे में, कैसे रहने के बारे में, कैसे बात करने के बारे में, ये सब हमें बहुत अच्छी से मिल रही है जानकारी, इसलिए हम बहुत खुश हैं। Post completion of training, the students are assessed by the employer beforehand. Thereafter, they repay their loans through wage deductions and become self-reliant. मैं आशा करूंगा और अपील करूंगा कि राज्य में और राज्य के बाहर जो विभिन्न कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं वे इससे जुड़ें, यहाँ के बच्चों के प्रशिक्षण में अपना योगदान दें और इस राज्य को आगे बढ़ाएं। आज बिना एसी का गाड़ी में घूम रहा हूँ, कल एसी का गाड़ी में घूम रहा हूँ। मिट्टी का मकान है तो पक्के का मकान पॉसिबल होगा तो बना लेंगे। मेरे भतीजे दोनों को पढ़ाएंगे, रहन सहन स्तर ऊंचा हो जाएगा सर। आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, अपने पैर खड़ाना चाहते हैं। The holistic approach, communication, all that. Life skills. The revenue model is also there in terms of they taking loan and repaying. So the retention of This is a brief of what we have in Jharkhand, all the district covered so far. Yeah, we will level it up. And another 9 are due by March. So it's a fast track right now. Tremendous support from the local government. We are only saying scale it faster. That's the only reason why we want to say something. And different skills requires Shapoji Baluji, Shubha developers, Tatas. that's where we use the PAN ID. All the employees will come from the. So we're actually coming home. That's it. Coming on both sides. Both sides. Different construction lines. We have a tailoring one, which is the image democracy and Simdega, we have in driving. So all 4 sectors which we are looking at focused on technical skills which are amenable to drop. and skills. Technology. So it's a partnership model. The government is on. All of these are unutilized buildings. So this was lying idle for 2 years. Now we identified such buildings in all the districts. And the team is working with the government to get them. You should not restrict yourself only to 20. Yeah, that's where we need. If you're just talking about that, we want to take this more national. And where we're looking at support is how we can really communicate with corporates and get more on board. You know, it's all employers. If we can get good quality employers, You're doing it exactly the right way, which is that you have to bring individuals. demand. जैसे employers के साथ आपका linkage बन जाता है, that's the same train कर सकते हैं। Training without direct linkage to employment is futile. This is exactly what We are also At the same time, with the activities that you talk to the strategies and a lot of other construction and engineering, they tell you that they have people who are electricians, carpenters, plumbers, drivers, so people who learn the trades. Right. So actually we do need this kind of an institution that can enable people to learn these kinds of trades. And at the same time, I think this is a very good thing that in India, is that along with the trade, we are also providing the soft skills. Because people who are coming from a very formal background, don't in many ways know how to conduct themselves in a professional corporate setting where they expect you to be accountable, where they expect you to do the work, show up and work and so on. So soft skills are always even more important than hard skills. Shapoji in fact came back to us and said, focus a little more on that. Now they're on the side, the supervisors come back and saying, we want boys from Jharkhand, from these villages. So we will be the best starting pay for our boys, then they can get to India. Now we have an SPD, so it's a not-for-profit called PAN Internally for Jharkhand. Mr. Muthuraman is the chairman.
Mr. Acharya, IIT Kharagpur, ex-director, second. Sunil is actually the third board member. And from their side, Amit Khare and Himani Pare. So both of them are welfare and finance. We have full-fledged team here. We are probably the biggest IIT recruiters. All of these guys are quitting their McKinsey and jobs. I'm not sure that's such a good idea. They're part of the team here. Part of the team here. We have nearly 49 IITs in the team, 100 people in the whole company. But this is just the Jharkhand or No, this is just all India. All India. So how many Gurukuls do you have? 22. No, I mean just in Jharkhand you could have. This is the scale up that we have to work on. That's really the thing. And you know, it's always going to be driven by the number of employers. This is what we've done. So we have to really focus on PAN IT because otherwise the rest can be mobilized. We came to Jharkhand, sourcing was an issue. Once we came here, we solved that. Now these things to be involved. So in the PAN IT network, we basically need to activate the network. So we just have a market and because Satya is from IIT Madras, he's very involved in the construction industry, procurement areas, and works with us and gives us a lot of advice on how we can implement personal needs. Apart from this road construction, there's a lot of other construction. For example, in civil aviation, they're going to be tripling airport capacity. So they're going to be building a huge number of airports. In fact, even in Hazaribagh, they're going to be building. And to build an airport, you actually need a lot of very sophisticated engineers. So what's happening? The construction industry is estimated to employ 3.5 crore people, and 95% are not certified. They've not gone through a formal training program. They got on the job and just learning and so on. One of the things that we're finding is the construction companies are not ready to. If a person gets certified, trained, certified, they're not ready to pay extra premium for the people with qualifications. So one of the things that we need to do is those who are certified get a higher. Whenever there's a contract, that certain percentage have to be certified. So there, you know, whenever you are ready, you can already have gone to the skill But as certification and request across, as something is acceptable to any agency, say that these are higher level. But that will have to be done by the skill ministry. That Or the answer is actually labor, where you guys have been defined separately for a certain skill. So then skill has to work with labor. So then you work with Shankar Agarwal, who is the secretary that's retired, but then he is somebody you know very well. Okay. So you have the no, so there's no problem. Anytime you want to meet him or the secretaries or whatever, sure, reach out to me and we can organize it. But really it has to be done through Rudiji's so Rudiji has to take it forward to labor saying this is how it should be done. Because you're right, there has to be that boost. If there's no boost, the economics won't. Then the economics don't happen. So that certification kind of wage differential has to be there. And the aviation sector, Skill India, we are very big. So what we probably need to do even the government contracts, and we're also talking to our big owners now, saying that, let us say, in the next 3 years, that at least 20% of your workforce needs to have the certification, you mandate it. Otherwise, you start. What's it? No, I don't think you even need to. And then we keep increasing that. I think you just the challenge there, of course, is that you know if you need to say that they have to be paid more, that employers may not employ them because they say they need to pay more. Yeah, So not then you have more, to. but you're saying that if you have a workforce of say 100 people, at least 20% of it has to be. Otherwise, you pay a tax to the government for the skilling. That's what Singapore did. What they said is, if you don't have people with the skill thing, you pay the government a certain tax. So they're forced to take skilled people. So these are the incentives. Yeah, so we'll have to think through that. Yeah. Because you are in fact becoming very intrusive then to employers. Because you're saying you can do this, you cannot do this, you'll have to do it this way. That's a very sort of heavy-handed way of operating. There is a way in which we can make incentives work. And the only way we can make incentives work, in fact, we wouldn't even want to worry about forcing a minimum wage differential and so on, is that people are genuinely more productive. Yes.
This is then, which they are, of course, I'm sure they are. Yes. Then the market should genuinely be willing to hire them faster and pay them more. So the question is, why is The signaling value. What happens? It's happening in a very gradual, it is not happening across the board. A few people are recognizing multiple rounds of working with it. But how do you make it scale? Now you're not talking about scale. No, so I That's think exactly. they, again, today you can go with the government sort of mandate, which is a heavy-handed inclusive bill. Or alternatively, you are able to demonstrate very clearly with a small group of people, you don't expand too quickly. You make sure that if Shapoorji is hiring these people, it's paying them more. They do that. They are paying them more and they are valuing the productivity difference. So the moment they are doing that, then other firms will look around and say, wow, we should do this. So Get that message across. the better idea would be to let markets work. Now the only question is how soon is that? Exactly. So that's what we've done since we need to do with the LFT and others. Aviation sector is one more. We need to actually look at technicians, Special skills that we need. specialists to the No, there of course there's a very elaborate certification process for aircraft maintenance engineers. At least the For which you now are going to get a degree and all of that. The downstream work, There are ground handling. Ground handling. For example, that is absolutely Yeah. So yes, there are a whole host of drivers, for example. Lots of people driving, to the airports. And there's all the Ground staff. ground people, all that. Because it's very, very bad. can organize a Skill India. Yeah, so we already have done that. So NFTC has defined all the rules. And what's the funding? The skill requirements. So you should look at that. We are NFTC funded. We are the most promising. Like, right? We have कोई समस्या नहीं। इसके बाद कहाँ शुरू? Yeah, we just want to quickly address the students and just give the visa. That's the PAN IT idea is to leverage the network. What are the real challenges that you are facing? I think it shifts from time to time. At the moment, it is a rapid scaling, and the fundamental issue there is finding sufficient employers to come up with commit on a sustainable basis. Here, we have some employees who come and commit. Their demand slacks, it has an impact on the offtake. So we need to always have buffers to manage that. So demand generation and commitment from employers and the differentiation in terms of who we are, not the same as what they think we were supposed to be. That's the external side. That's the external side. We are a not-for-profit. So what happens is it's a Section 25. Therefore, there's no risk capital available. So there's no equity equivalent still in the country. The impact investing, as you know, is all for profit. Generally, very rarely. Okay, but we need to reach out to those folks and be able to kind of look There are at. a number of proper number indicating state bank. This is involved. Business is involved. You should talk to that. So that's where we need to have the network where probably again. Those are the people who are looking at innovative things. We need to kind of get support that way. Because that like technologies for this, we need to put R&D to really say what will a Hindi speaking, a really poor Hazaribagh kid can really kind of absorb. How do we give technology that makes sense for him, not something which is produced abroad and rehashed here. So in Jharkhand we have the estimate is how what first year was slow, but what we settle down and start showing results, tremendous support. So how we can replicate this model in other states, that would be really. Now we have a specific state-based model. With the SPV, it's the equity from the government. They have partners in the game. So the whole relationship is shifted. They're able to work on the 60% is the PAN IT Foundation, 40% is held by the agencies of Department of Welfare, ECDC, SCDC. They have all the buildings. They asked us to do ITI. So they're saying come to the model ITI. So we'll do something over a 1-year program. Where you can do a bring in high volunteers. It's all debt capital. The problem is that debt is this market is not. We have to explore that as of now. Manish is then again IIT Dhanbad. What's amazing is the team they have assembled of the IITians and IIM guys and so on who came on board with them. They've given up very good jobs and Yeah. We pay decent charge. You're not I was batchmate of Badri. Yes, Badri has invested in my startup. Hari runs, he's the chairman of Indus OS.
and Mr. Satya and Mr. Gopal Krishna is ex-NABARD. Yeah, in fact, Mr. Gopal Krishna is instrumental in getting us the NABARD funding initially. Put all together with that support with us. NABARD is going to be Harsh is a very good person. So we need to get, we are in fact come with the microcredit card. This is a battle we've been fighting with banks where basically NABARD is giving the initial loan, these kids are repaying. But how do we convert that to like a credit card overdraft? Because they don't have your salary certificate. So we said based on actual credit history and UID based linkage, future of course you can say that. So, I tell you, you will, as you deal with this set of challenges, you will come up with solutions. And those solutions then can be scaled up. It's good to have problems because then you find solutions. So my own philosophy with the Japanese philosophy is every defect is a treasure because it's an opportunity. It's a learning. Shahnawaz, IIT Bombay, IIT Madras. The first 3 years was only that. All assumptions we wrote down initially got knocked out, but reworked it 3 times. Finally, we got it. We're tapping the CSR. Triveni is also CSR partner. Training also needs a lot of skilled people as well. Yeah, we are already paying the. In fact, that will be very helpful because obviously the demand for migratory is one. The demand to get local people these skilled jobs is very high. So perhaps we can consider this. I would suggest is that we set up something like this in Bartagaon so that people can get trained and they can get jobs of driving and excavating and all those skilled jobs as well. Maybe आप लोग इसके जरा work with them to see. We are looking at how we can work with them with the earth moving side. Yeah, that's what I'm saying. Because we need a lot of drivers and excavators, equipment operators. This is a quick listening background. So this is how our students' data is capturing. We are using the poverty measures of Grameen Bank to understand the early and the annual income. Mostly from affirmative action class. Aptitude test. Then they have their EMI and their quality and all of that. So most of these kids, they create their passports once they enroll here. And then birth certificate, passport, then medical, whole process. What's excellent. They earn about 20 to 25. Sorry again for being so hard. Just a minute. Reach out to you and Sure. I need a video by Pan IT. मंच पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है I think Mike's there. I think maybe better to sit down there. Better bird.
can ask the boys to come. और पहले सब आगे आ जाइए, आगे तो बैठ जाइए, कुर्सी फटाक से यहाँ नजदीक करो, हाँ नजदीक करो वैसे। त्योहार आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और साथ ही में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री नागरिक उड्डयन श्रीमान जयंत सिन्हा का कि वो आज समय निकाल के हमारे यहाँ पर आते हैं और बहुत बहुत खुशी हुई हमारे साथ। जिस तरह से हम लोगों ने गुरुकुल का पूरा प्लान किया था आज सुबह, काफ़ी एनर्जी सुबह हम लोगों को दिखी थी, बट अभी मैं देख रहा हूँ एनर्जी कॉन्स्टेंट है यहाँ पर, तो इसमें ज़रूर ऐसा भी कुछ ज़्यादा होगा कि जिनकी हम लोग इतना वेट करने के बाद भी हम लोग थके नहीं। इसी के साथ मैं अभी यहाँ पर अनुरोध करूँगा श्रीमान हरि पद्मनाभन फैक्ट्री चेयरमैन करने के तुम्हारी फाउंडेशन का यहाँ करते हुए थोड़ा स्वागत So warm welcome, if I can say, in this little chilly evening to Mr. Jayant Sinha, Honorable Minister for National State for Civil Aviation. He's also a pan IIT person. He's on both sides. He's like coming home. Jayant Sinha साहब है, वो हमारे IIT के ही हैं, तो एक तरफ से हमारा गेस्ट है, लेकिन वो हमारे भी हैं। तो ऐसा है कि उनके घर में उनको खुद हम अभी वेलकम कर रहे हैं। We took a little bit of time to get our model right, that I was saying, but about 5 years back we came to Jharkhand, and in Jharkhand we probably found the best partner we can work with in the government. The people who came here and worked with us and without training here, the kind of distinction they have earned with our employers in terms of the differentiation in how they work. The employers now want more and more boys from Jharkhand. This is the main difference. So आपके पहले यहाँ से जो जाके बड़े कंपनी में शाहपुर जी पाल जी और जहाँ काम किए हैं, तो शाहपुर जी पाल जी आपसे कहता है कि हमको झारखंड से हमें और 10 लोग चाहिए। तो आपके जो एटीट्यूड है, आपके जो आप जैसा लगा के बन लगा के यहाँ काम करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और वहाँ जाके काम करते हैं, उसी के निर्भर आगे भी हम चल सकते हैं, है ना? तो इसमें आपको बड़ा जिम्मेदारी है कि वो जो रेपुटेशन आपके पहले जो गए हैं, वो जो भी इस्टेब्लिश किए हैं, वो आपको और बढ़ाना पड़ेगा और ज़्यादा परिश्रम करके उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, है? So with that, I don't want to take too much time. It's pretty late in the evening. I'd like to request you to say a few words to the boys. बहुत बहुत धन्यवाद। इस समारोह में मंच पे उपस्थित श्री हरि पद्मनाभन जी, श्री सत्यनारायण जी और श्री गोपाल कृष्ण जी, यहाँ उपस्थित इस गुरुकुल के और सब अधिकारीगण, मेरे साथ आए हुए श्री अखिलेश तिलोटिया जी, श्री अभिनव नायर जी, यहाँ के विद्यार्थी, शिक्षक और सब यहाँ मौजूद भाइयों और बहनों, आप सबको आज बहुत रात, मुझे मालूम है बहुत रात हो गई है, तब भी मेरा सप्रेम नमस्कार। पहले तो मैं आप सबसे क्षमा मांगूंगा कि मैं इतने लेट यहाँ पहुँचा। कुछ स्केड्यूलिंग में जो हम लोगों ने जो प्रोग्राम बनाया था उसमें कुछ गलती हो गई और हम लोगों को लगा कि जो ये गुरुकुल है ये थोड़ा ज़्यादा पास है, हम लोग नहीं मालूम था कि ये चाक मोड़ पे है।
हमने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया और हम लोग चितरपुर गए हुए थे। आपको मालूम है ना चितरपुर का? तो चितरपुर हम लोग गए हुए थे और फिर चितरपुर में कार्यक्रम समाप्त करके होली क्रॉस स्कूल में वहाँ प्राइज सेरेमनी थी, उसको समाप्त करके फिर हम लोग गाड़ी दौड़ाते दौड़ाते यहाँ आपके पास 10 बजे रात को पहुँचे। हम लोग सोचे थे शायद थोड़ा जल्दी भी आ गया, पर आपके करीब जैसे आए तो वहाँ बहुत लंबा एक ट्रैफिक जाम भी मिल गया। तो वहाँ हम लोगों को ट्रक वक्त हटा हुलू कर फिर आप लोगों के यहाँ 10 बजे आए। तो फिर एक बार बहुत बहुत माफ़ करिए, मतलब क्षमा मांगता हूँ, माफ़ करिए, क्योंकि ये इतने लेट हम नहीं चाहते थे कि हम यहाँ पहुँचे, परंतु हम आ गए हैं और आप लोगों का सब काम देखे और आप लोगों ने जो जो किया है उस पर बहुत हमने ध्यान से हमने सब जो जानकारी है प्राप्त की है। और मुझे मित्रों, मुझे हर्ष भी हो रहा है और गर्व भी हो रहा है। हर्ष इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे पद्मनाभन जी आपको बता रहे थे कि मैं भी एक IITian हूँ, पैन IIT का सदस्य मैं भी हूँ, तो मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि IITian होने के नाते एक इतनी अच्छी संस्था, एक इतना अच्छा काम, हमारे जो IIT के सहयोगी हैं, हमारे जो IIT के मित्र हैं, उन लोगों ने इतना अच्छा यहाँ काम किया है, कितनी अच्छी संस्था खड़ी की है। और सिर्फ हजारीबाग में नहीं, झारखंड भर जो आपके अब 11 ये गुरुकुल जो हो गए हैं, वहाँ इतना अच्छा काम हो रहा है। इसलिए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे ही सहयोगी, हमारे ही IIT के मित्र इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। हम लोग बहुत धन्यवाद उनको देना हम लोग को चाहिए। हम लोग बहुत आभारी हैं कि उन लोगों ने इतना अच्छा काम किया। इन लोगों की एक जरूर ताली हो। और क्योंकि मैं IIT के विषय पे बोल रहा हूँ, शायद आपको यह ना मालूम हो कि सिर्फ मैं IIT से नहीं हूँ, सिर्फ मैं IIT से नहीं हूँ, मेरी पत्नी पुनीता जी वो भी IIT से, तो हम लोग दोनों IIT से हैं। और ये भी एक थोड़ी एक विचित्र बात है कि हर IIT में हर साल 3-4 एलुमनाई जो होते हैं उनको विशेष एलुमनाई, डिस्टिंग्विश एलुमनाई का एक इनाम दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। तो आपको खुशी होगी सुनकर कि मुझे अपने IIT से, IIT दिल्ली से ये इनाम ज़रूर मिला है और मुझे ये पिछले साल मिला। लेकिन मेरी पत्नी को ये इनाम मुझसे 5 साल पहले मिला और मुझे अभी भी उससे जलन होती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे IIT हो गए, करीब 15 IIT हो गए हैं और कुल मिलाकर हमको बता रहा था कि कुछ शायद 3 या 4 लाख लोग हैं जो IIT से ग्रेजुएट किए, और वो अंडर ग्रेजुएट डिग्री, ग्रेजुएट डिग्री, PhD सब मिला मिलू के करीब 4 लाख 5 लाख ऐसे लोग हैं जो IIT से ग्रेजुएट किए हैं, जिनको IIT से डिग्री मिला। लेकिन IIT के 60 साल के इतिहास में सिर्फ एक IIT कपल है, दोनों को जिसको डिस्टिंग्विश एलुमनाई होना है। तो इसलिए IIT के साथ जो मेरे संबंध हैं बहुत ही गहरे संबंध हैं, और जो संबंध है वो जिंदगी भर का संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। और इसलिए मुझे बहुत हर्ष होता है देखकर कि हमारे IIT के मित्र, हमारे IIT के सहयोगी आप लोगों के लिए और देश के लिए इतना अच्छा काम कर रहा है, तो ये मुझे हर्ष होता है। पर मित्रों, मुझे गर्व भी बहुत, मुझे गर्व भी है क्योंकि अगर मैं IITian भी हूँ तो आपको मालूम है कि मैं हजारीबाग का भी वासी हूँ, मैं हजारीबाग का, और आपको मालूम है कि मेरा जन्म भी हजारीबाग जिला में हुआ। और इसके पीछे भी एक कहानी ये है कि मेरा जन्म गिरिडीह में हुआ। हजारीबाग, आज की जो हजारीबाग जो जिला है उसमें नहीं हुआ, गिरिडीह में हुआ। लेकिन उस समय मेरे पिताजी गिरिडीह में SDO थे, और जो गिरिडीह में SDO बंगला है उसी के बंगला में 1963 में मेरा जन्म हुआ। अस्पताल में नहीं हुआ, वही बंगला में। आज भी जाकर आप उस बंगले में जा सकते हैं, उस कमरे में जा सकते हैं जहाँ मेरा जन्म हुआ। तो जब पिताजी गिरिडीह में SDO थे, उस समय गिरिडीह जो था वो हजारीबाग का ही एक सब डिवीजन था। इसलिए मैं बिल्कुल सही तरीके से कह सकता हूँ कि मेरा जन्म हजारीबाग जिला में ही हुआ। सही है ना? तो इसलिए मुझे गर्व होता है।
क्योंकि मैं असली हजारीबाग का वासी हूँ। और जब आप लोग इतना बढ़िया यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं, इतना अच्छा आप लोगों को हुनर मिल रहा है, और सिर्फ आप लोग अच्छा हुनर नहीं आप लोग प्राप्त करते हैं, आप लोग दुनिया जहां में जाकर दिखा रहे हैं कि हजारीबाग के लड़के, हजारीबाग के युवा इतना बढ़िया काम कर सकते हैं। और हजारीबाग का नाम शपूर जी, पलौन जी में और पूरे विश्व में, मिडिल ईस्ट में जाकर आप लोग हजारीबाग का नाम रोशन कर रहे हैं। इसलिए मुझे बहुत गर्व होता है। मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम लोग आभारी हैं कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं भरोसा देना चाहता हूँ अपने IIT के मित्रों को कि अगर आप 11 नहीं, 20 नहीं, 100 गुरुकुल झारखंड में अगर आप खोलें, तो मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि जो बच्चे आएंगे, जो युवा आएंगे, जो यहाँ हुनर प्राप्त करेंगे, वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेंगे। जहाँ भी जाएंगे झारखंड का नाम रोशन करेंगे, और जहाँ भी जाएंगे उस कंपनी में तरक्की तो होगी ही, परंतु क्योंकि वो इतनी मेहनत करेंगे और इतना अच्छा करेंगे अपने करियर में कि वो झारखंड की भी तरक्की इस द्वारा कर सकते हैं, झारखंड को भी विकास ला सकते हैं। और इसलिए मैं फिर आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं, आप लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग जो ये बढ़िया काम कर रहे हैं इसको आप लोग करते रहिए। हम लोग आपके साथ हैं, आपको पूरा सहयोग देंगे, आपको पूरा समर्थन देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद सर। काफ़ी इमोशनल हो गए थे सर, काफ़ी क्लियरली नज़र आ रहा था। IITians ऐसे मिलते हैं तो प्यार निकल के आता है। आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी के साथ मैं वापस अनुरोध करूँगा माननीय मंत्री जी से कि जो हमारे कुछ छात्र जिनका कि वीज़ा आ गया है, ऑफर लेटर्स आ गए हैं, तो उनका कुछ उनको दें। तो मैं चाहूँगा दीपक कुमार साहब, दीपक कुमार सर यहाँ से बहुत बधाई। जीवन भगत, कोटालाल मुंडा, पिंकू नायक, रहबर अंसारी, सुनील कुमार पंडित, अरुण कुमार यादव, सुजीत कुमार रे, दिनियाल अंसारी, मोहम्मद साहिल अंसारी, राजेंद्र कुमार। ये हमारे कुछ छात्र हैं जो कि उत्तीर्ण हुए हैं अभी अभी और इनको नौकरी पा गई है, और आप लोग सब भी इंतजार कर रहे हैं कि आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जल्द से जल्द और आप लोग भी इनके साथ में वहाँ मिडिल ईस्ट के अंदर अच्छा बढ़िया कंपनी में काम करें। और धन्यवाद दूंगा सर। और इसी के साथ फिर मैं कल्याण चक्रवर्ती जी को कहूँगा कि आप वोट ऑफ थैंक्स। पहले हम सबको धन्यवाद देना है। साहब को देर भी हो गई, लेकिन साहब जैसे बोले दुरुस्त आए हैं, बहुत टाइम स्पेंड किया हमारे साथ, और हम इतनी खुशकिस्मत रहे आज कि साहब इतनी टाइम स्पेंड कर पाए हमारे से और इतने अच्छे वचन बोले हैं। तो हमारे तरफ से एक छोटी सी मोमेंट तो हम साहब को देना चाहते हैं। आई विल रिक्वेस्ट मिस्टर हरि पद्मनाभन टू हैंड ओवर तो अखिलेश आपको एक बार थोड़ा स्टेज पे निमंत्रण दे रहे हैं फॉर ऑल द सपोर्ट इज गिवन अस। अभिनव नायक साहब भी तो सत्यनारायण will hand over. And I request Mr. Gopal Krishna to hand over to Mr. Abhinam Nayak. And Hari, you can give the mementos to Professor Satyanarayan and Gopal Krishna. Hari, you can give the mementos. और हम हमारी नाबार्ड हमारे पार्टनर्स रह चुके हैं, नाबार्ड, NSDC, नाबार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज, त्रिवेणी,
और शापोजी कॉलेज इंटरनेशनल और झारखंड कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड जिसने एक्चुअली इसका कैपेक्स के लिए फंडिंग दिया था, और ऑफकोर्स जिला प्रशासन सब टीम बहुत अच्छे की, हमारे मित्र हमारे टीममेट्स बहुत अच्छा काम किया है, प्रोजेक्ट वाले, ऑपरेशन वाले, सोर्सिंग वाले सब अच्छे किए हैं। बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत रात हो गया है लेकिन आपकी ज़िंदगी में ये सुबह बहुत जल्दी है। हाँ, पूरा लंबा सफ़र है, अच्छा सा तय कीजिए, अपना तरक्की कीजिए। धन्यवाद। Thank you. No, you spent so much time. You're very great. Sorry. Yes, of course. Okay. Good night. The first day when we conceived that you were the right person to come in. Satya. Yeah. Thank you so much. Sorry. Now I need Tirupati. I know. I saw that. 23rd I. The five will always be the five. That's good. I'll second that. Part of that. He's also part of that.